Good morning, everyone, and welcome to Morning Con Call. First, we'll start with technical days a bit. In yesterday's session, if we see index open on a flattish note, but if we see more of an expiry movement came in the post last hour. In the last hour, as soon as we see index reach about 18,200, a ferocious short covering rally was witnessed towards 18,255 or levels, and we made a high near about 18,260. Now, the main zone would be 18,300 levels. And we feel that if this is also taken out, or if you close also today is closing towards 18,250, 18,300 odd levels. So this would be a posting a weekly high and a fresh base would be set up near 18,000, 17,800 zone. And we could see fresh highs coming towards 18,800, 19,000 zone can be taken out in the month of May. Uh, in the month of May for the Nifty. So similarly for the Bank Nifty, if you see Bank Nifty is also trading on a positive as soon as you see 43,500 was taken out, we have witnessed a short covering moves in both the indices toward 43,700 in the Bank Nifty. So Bank Nifty we can witness 44,000 taking out also that because that is only 250 points from here on. So on the Bank Nifty higher side, 45,000 could be a target for the coming next expiry moving ahead. And for similarly on the support side, if we see then 42,500 could be used as a support for the index. On the stock specific front, on the sectoral front, if we see then financial services and PSU and private banks were the stocks were trading on the positive side, while the FMCG was only the loan, which was red because it's a defensive player in the index. So coming to the Bank Nifty, if you see the more of a weighted heavyweights were moving yesterday. HDFC Bank, SBI were taking the index higher, and Federal Bank and PNB Bank on the PSU sides were taking the index. Similarly, IndusInd, IDFC, and ICICI banks were trading on the negative side. So now coming to the derivatives, if we see Nifty futures have seen a long beta to a tune of 1.6%, addition of 0.17 million shares. So now total outstanding stands at 10.73. The PCR was also higher, it closed at 1.26 compared to 1.02. On the options front, if we see for Nifty, the call writings are visible at 18,300, 18,400, 18,600 also we can see. These strikes are there, so we are seeing writers have been being skeptical and they are moving on the higher range. And on the put side, we see an 18,200, 18,100 are the fresh put writings over here. So that could now act as in support for the index. And similarly for the Bank Nifty on the PCF front, if you see the Bank Nifty PCF from 1.09 to 1.21. And on the futures front, if you see there was again a long build up, Bank Nifty long build up was higher by 7.73%. So we can see massive longs in the Bank Nifty index. And the put also, if you see then 43,500 and 43,600 are the strikes where we have seen a writing over here. And on the call front, 43,800 and 44,000 and 43,700, these are the strikes where call writers are active on this side. Now coming to the FIR statistics and this overall, if you see FIR have reduced their short position by 4,000 contracts, so they are net short by 8,000 contracts and long short ratio stands at 47%. So FIs are also not aggressively decreasing their sure, they are decreasing their short position, but they are also not increasing. So we have to wait and watch what are the FIs move. But on the cash rate, they are continuously buying from the last 4 days. Now to yesterday also they bought it 1,400 odd crores, and DIs also bought it 441 odd crores. So stocks which can kept on watch are Concord, Escorts, and Bajaj Finance. These stocks are looking good on charts and they were 3 to 4% of rally from here on. Long build-ups were seen in ABB, Coromandel, and Chola Finance, while short build-ups were seen in Tata Chemical, GNFC, and ICL. So that's it from mine. I'll hand over to Mantri sir for more updates. Thank you, Hitendra. Good morning, sir. Good morning, team. As the result season continues, we'll share few results updates. Starting with the HDFC Limited. HDFC Limited has reported strong set of numbers. If you see the AUM growth, though AUM growth has declined further from 13% Q3 to 11% in Q4, which was purely led by non-individual portfolio, but that is the key strategy they are focusing on the merger part, because the non-individual portfolio where they are not, where the banking is not comfortable, they are degrowing or declining that portfolio. Asset quality has improved with gross stage 3 assets stood at 1.4% versus 1.8%, which was led by non-individual portfolio again. Also, restructured assets has declined to 0.6 versus 0.7%. The good part here is the margins has improved sequentially on a Q-on-Q basis, the 3.5% to 3.6%. Also, PAT growth was around 20%, which was led by higher operating profits, which was up by 16% on a YOY basis.
Although numbers looks good, but the focus area or the stock performance completely depends upon the merger part, as the HDFC Bank and HDFC Limited merger has already been decided. So with that respect, HDFC Limited performance will be there. Along with this update, there is a small negative news from the MSCI part that there could be a selling of around 150 to 200 million dollars, which should have a slightly negative impact on the stock performance. However, we believe financials or fundamentals will work in long term, so we remain positive on the HDFC Limited with a buy target price of 3,300. Next is on the TVS. TVS has reported in-line numbers with the street estimates. The revenue was up 19% on a YOY basis, led by average increase in selling price of 18% during the quarter. Also, EBITDA margin has expanded by 22 bips to 10.3% because of the premiumization and better product mix. Going forward, company is planning to launch electric vehicles in two-wheeler and three-wheeler segments in next 2 to 3 years, and further plans to launch its iQube in international market in coming quarters. We understand TVS is likely to grow ahead of its industry in its domestic region. Currently, we have a hold rating with a target price of 1253. Next is on the Hero. Hero has also reported in line with the street estimates. The revenue was up 12% on the back of volume growth of 7% YOY. EBITDA margin also has increased by 112 bips at 13% because of combination of pricing, saving, and product mix. If you see the adjusted net profit, which was around 850 crores, which was higher by 17%. Also, company or management has declared the dividend of 35 rupees per share. So this seems to be a stable and strong set of numbers, which bodes well for the Hero stock. Next is on the C8 C8 Limited. The C8 Limited, the revenue was up 11% at 2,875 crores versus estimate of 2,900 crores. EBITDA up 96% at 367 crores versus estimate of around 296 crores. So there is a good beat on the estimates from the EBITDA per se. In fact, EBITDA margin estimate were around 10%, but they have reported 13%. So this has resulted in a net profit up by 5x or 5 times at 132 crores versus estimate of around 83 crores. Along with this, the board has approved a final dividend of rupees 12 per share. So this seems to be a very strong positive numbers from C8 along with the good amount of final dividend of 12. So this bode well for the C8 tire stock as such. Lastly, on the road sector, yesterday the ICRA has come out with the webinar on the road sector. They have said that awards are expected to decline at 9,000 to 9,500 kilometer in FY24. If you try to compare with 23, it is down by 23 to 27% on a YOY basis. The reason behind is that due to election and weakness expected in FY24. Also, road awarding has been weak for listed players in FY24. Now, with the expectation of low awards in FY24, stock performance could be muted, but however, it depends upon the asset monetization. In capex, ordering from building, which is real estate, water, railway, has been robust and can be gauged from the order inflow seen for Ahluwalia, NCC, PSP projects. Overall, we have a buy rating on the road sector on the three stocks under road sector, NCC, PSP, and Ahluwalia. If you see the valuation, NCC is trading at 9x FY25, PSP is trading at 10x FY25, and Ahluwalia is trading at slightly premium at 12x FY25 EPS. That's it from my side. Over to you, Shantanu. Yeah, thank you, sir. Good morning to everyone. Starting with the first news that is on Indigo, where on Thursday the company said that its Airbus aircraft are expected to be a bit lighter in weight following Aviation Safety Regulator DGCA granting it approval to remove technical paper manuals. The company said that regulatory nod allows the airline to remove technical paper manuals weighing 40 kgs from each aircraft cockpit of its Airbus fleet.
Coming to the next news based on Zydus Life Sciences, where the pharma company has received final approval from United States Food and Drug Administration, that is US FDA, to manufacture and market sucralfate tablets USP 1 gram. Sucralfate is used to treat and prevent ulcers in the intestines by forming a coating over ulcers, protecting the area from further injury. The next news is about SBI Life Insurance Company, where subject to Insurance Regulatory and Development Authority of India, that is IRDA, and shareholders' approval, the board has given its approval for the extension of the term of Mr. Mahesh Kumar Sharma as the Managing Director and Chief Executive Officer of the company up to September 30, 2023. The next news is about IGL, where diversified renewable energy company Acme Cleantech Solutions and City Gas Distribution Company IGL signed a memorandum of understanding to jointly explore the potential business opportunities of green hydrogen. Coming to some results, starting with HDFC Bank, the net sales at rupees 16,679.43 crore in March 2023 were up by 35.61% from rupees 12,299.99 crores in March 2022. Quarterly net profit at rupees 4,425.50 crores in March 23 was up by 19.6% as compared to 3,700.32 crores last year. EBITDA stands at rupees 15,681.02 crores in March 23, which was up by 36.96% from rupees 11,449.18 crore during last year. The next results are of Dabur India, where net sales was at rupees 2,677.80 crore in March 23, up by 6.35% from rupees 2,517.81 crore in March 22. Quarterly net profit at rupees 300.83 crore in March 23 was up by 2.25% from rupees 294.22 crores last year. EBITDA stands at rupees 530.56 crore in March 23, down by 4.01% from rupees 552.71 crores last year. The next results are of Adani Enterprises, where the flagship company of Mr. Gautam Adani Ports and Energy Group on Thursday reported more than doubling of its net profit in March quarter on the back of growth in airports and road businesses. According to a stock exchange filing by the company, net profit in January to March at rupees 722.48 crore compared to rupees 304.32 crores in the same period last year. Revenue soared to rupees 31,716.40 crores in the fourth quarter of 2022-23 from rupees 25,141.56 crores a year back. The Adani Group is developing an integrated data center and technology business park in Andhra Pradesh to boost local technology ecosystem in the region. The park will host 300 megawatt of data center capacity powered with up to 100% renewable energy. Coming to the next results, which were of Titan, the net sales is at rupees 10,360 crores in March 23, up by 32.89% from rupees 7,796 crores last year. Quarterly net profit at rupees 730 crore in March 2023, up 43.14% from rupees 510 crore in March 22. EBITDA stands at rupees 1,203 crore in March 23, which is up by 38.28% from rupees 870 crores last year. The next results are of Petronet LNG, where net sales at rupees 13,873.93 crores in March 23 is up by 24.31% from rupees 11,160 crores in March 22. Quarterly net profit at rupees 618.80 crores in March 23 is down by 21.77% from rupees 790.98 crores in March 22. EBITDA stands at rupees 1,073.85 crores in March 23, down by
14.09% from rupees 1,250 crore in March 22. The final news is about Sterlite Technologies, where the board meeting will be held on May 17 to consider raising of funds by issue of equity shares or any other securities convertible into equity shares or a combination of such securities. The board will also consider approval of audited financial results for the year ended March 23 and recommendation of dividend. So this was all from my side. Now handing it over to Brijesh sir. गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी ये कॉल का हम एक बार हिंदी में कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एचडीएफसी लिमिटेड के न्यूज़ के साथ, जो एक पॉजिटिव है। तो ओवरऑल ग्रोथ के नंबर्स काफी अच्छा है, बट ईओएम अगर आप देखते हैं तो फिर 11% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुआ है। बेसिकली इनके एसेट का ये जो डिक्लाइन हुआ है, जो बेसिकली नॉन इंडिविजुअल पोर्टफोलियो ये सेगमेंट में डिक्लाइन देखने को मिला है। एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जो एसेट स्टूड हुआ 1.44% वर्सेस 1.8%। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है, इनके भी नॉन इंडिविजुअल पोर्टफोलियो के जो सेगमेंट है उसमें थोड़े से गिरावट देखने को मिली है। सो डिसबर्समेंट जो देखा गया था लोन सेगमेंट में, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली 16% ईयर ऑन ईयर FY23 में। निम्स भी इम्प्रूव हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्योंकि रेट हाइक के चलते मैनेजमेंट के जो गाइडलाइंस है वो जो 3.3 से 3.5% का बताया गया है। पैट में भी ग्रोथ देखने को मिला है 20% ईयर ऑन ईयर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ऊपर थे 16% ईयर ऑन ईयर। सो नेट ये काफी अच्छा है। एक MSCI इंडेक्स में रीबैलेंस वेटेज के चक्कर में हो सकता है कि थोड़ा सेलिंग आपको देखने को मिले। ये टेम्परेरी करेक्शन हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। तो हमारे बाइंग रेटिंग है 3,300 का टारगेट प्राइस है। तो करेक्शंस में हम इसे बाय रिकमेंड करेंगे। अगला अपडेट टीवीएस पॉजिटिव टीवीएस के ऊपर है। सो द टीवीएस के नंबर आए थे, तो उनके रेवेन्यू अब थे 19%, जब 19% है, और एवरेज सेलिंग प्राइस 18% देखा गया था ड्यूरिंग द क्वार्टर। एबिटा के मार्जिन्स में एक्सपांड हुआ 22 बिप्स पॉइंट थे 10.3% जो क्वार्टरली एंड के। तो उन्होंने बताया कि वो दो नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करेंगे, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स के सेगमेंट में, 2 से 3 साल के टाइम फ्रेम में ये लॉन्च करेंगे। तो उनका जो एक iQube जो ब्रांड है, वो इंटरनेशनली मार्केट में भी वो कमिंग क्वार्टर्स में लॉन्च कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि ये इंडस्ट्री, डोमेस्टिक इंडस्ट्री में उनका काफी स्ट्रांग होल्ड है। तो ये काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है ये काउंटर के लिए। तो इस पे हमारा होल्ड है, रिवाइज टारगेट प्राइस है 1253 का रेट के लिए। उसके बाद हीरो मोटर के नंबर्स आए थे, इनलाइन थे स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस के चलते हैं। रेवेन्यू ऊपर था 12% ईयर ऑन ईयर। ग्रोथ का वॉल्यूम देखे थे 7%। EBITDA मार्जिन वो भी ऊपर थे 112 बेसिस पॉइंट, जो एस्टिमेट किया गया था 13%। सो नेट एडजस्टेड प्रॉफिट टू देखा गया 8.5 बिलियन, जो कि 17% हायर था एस्टिमेट से। तो मैनेजमेंट ने डिक्लेयर किया कि वो फाइनल डिविडेंड देंगे 35 रुपीज पर शेयर। नेक्स्ट एक अपडेट है रोड सेक्टर के ऊपर। एक वेबिनार हुआ था जिसमें इकरा ने बताया कि उनके जो आगे के जो ऑर्डर्स है वो शायद थोड़े से कम हो सकते हैं, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में इलेक्शंस और थोड़े से सेक्टर में थोड़ा वीकनेस देखने को मिल सकता है। तो जो जिसके जिसके चलते थोड़ा सा डिक्लाइन हो सकता है, बट देन ओवरऑल हमें ये ओवरऑल सेक्टर में काफी ग्रोथ और रोबस्ट व्यू है। इसमें जो स्टॉक्स हैं जो हमें अच्छा लगता है वो है आलूवालिया, एनसीसी और पीएसपी प्रोजेक्ट, जिसमें हमारे बाय रेटिंग है। हमें लगता है कि इन तीनों काउंटर्स पे हमें ध्यान रखना चाहिए। जब जब अपॉर्चुनिटी मिलता है इसमें हमें ट्रेड इन ट्रेड आउट करना चाहिए। तो इसमें पॉजिटिव बायस है। सीएट के ऊपर एक रिजल्ट्स आए थे। सीएट के जो रेवेन्यू थे वो 11% थे 2875 क्रोर्स एस्टिमेट से, जो कि ब्लूमबर्ग के जो एस्टिमेट थे वो
1,104 crores था। EBITDA up था 96%, 367 crores, और ब्लूमबर्ग के जो एस्टिमेट से 295 crores थे। EBITDA मार्जिन 13% वर्सेस 7% था, जबकि ब्लूमबर्ग का जो एस्टिमेट था 10.2%। नेट प्रॉफिट 5x से बढ़ोतरी देखी गई है, 132.42 crores, जबकि ब्लूमबर्ग के जो एस्टिमेट थे 83.60। तो बोर्ड एक फाइनल अप्रूवल देगा 12 पर शेयर, और जो 31 मार्च 2023 के लिए होगा, डिविडेंड ये डिक्लेयर करेगी। अगला न्यूज़ है इंडिगो के ऊपर। इंडिगो पे एक अपडेट है कि बताया गया है कि उसके वेट कम करने के लिए जो वो टेक्निकल पेपर मैनुअल जो होते हैं उसमें वो बेसिकली ये उनके जो जितने भी एयरक्राफ्ट है उनके कॉकपिट्स में वो लगते हैं, इसके जो वजन इसका जो वेट होता है नियरली 40 केजीज के आसपास होता है। तो ये डीजीसीए ने इसका अप्रूवल दे दिया है, तो इससे ये कम होने के कारण जो इनके जो एयरक्राफ्ट है उसमें वेट थोड़ा कम हो जाएगा, विच इज बेसिकली अ पॉजिटिव न्यूज। जाइडस लाइफ को अप्रूवल मिला है यूएस एफडीए से, जहाँ पर उन्होंने वो जो मैन्युफैक्चर करेंगे स्कर्फल्फेड टैबलेट्स है। ये बेसिकली यूज होता है जो अल्सर्स इंटेस्टाइन में जो अल्सर्स होते हैं उसको उसके ऊपर एक कोटिंग होता है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज हो सकता है जाइडस लाइफ के लिए। एसबीआई लाइफ के ऊपर एक अपडेट है। शेयर होल्डर्स और आईआरडीए के अप्रूवल के बाद ये देखा गया है कि महेश कुमार शर्मा इनका एक्सटेंशन है एक्सटेंशन होगा एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये होगा 30 सितंबर 2023 तक। इसके बाद है एचडीएफसी बैंक बैंक के नतीजे आए थे। सेल्स जो थे 16,670 करोड़ के आसपास था मार्च 2023, जो कि 35% अप थे एज कम्पेयर टू मार्च 22। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट 4,425 थे इन मार्च 23, जो कि 19.61% अप था मार्च 22 के मुकाबले। एबिटा numbers 15.681 crores थे मार्च 23 में, जो कि 36% थे एज कम टू मार्च 22। डाबर डाबर इंडिया के भी नंबर्स देखने को मिले। सेल्स थे 2,677 crores, जो कि 6.35% अप था एज कम्पेयर टू मार्च 2022। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट भी ऊपर थे 300 करोड़ के आसपास मार्च 23 में, जो कि 2.25% है मुकाबले मार्च 22 के कंपैरिजन में। एबिटा में भी एबिटा के नंबर्स 530 क्रोस आए थे, जो कि इसमें गिरावट देखने को मिली है 4% एज कम्पेयर टू द मार्च 2022। अगला एक अपडेट है अडानी एंटरप्राइजेस के ऊपर। अडानी के भी नंबर्स आए थे गुरुवार के दिन, जहाँ पे उनके काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए थे। नेट प्रॉफिट जो मार्च में जनवरी से मार्च का जो देखा गया वो 722 क्रोर्स थे, जो कि यही जो पिछले साल ये क्वार्टर में देखते तो जो 300 करोड़ के आसपास थे, जो जबकि इस साल में वो 700 करोड़ के आसपास आए। रेवेन्यू काफी बड़ा है, 31,716.40 करोड़ देखा गया फोर्थ क्वार्टर में, जबकि यही रेवेन्यू पिछले साल यही क्वार्टर में 25,000 करोड़ के आसपास था। तो अडानी, इसके अलावा अडानी ग्रुप एक डेटा सेंटर बनाएगी आंध्र प्रदेश में, टेक्नोलॉजी पार्क है। तो ये बेसिकली टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने के लिए उस रीजन में होगा। तो एक पार्क बेसिकली 300 मेगावाट ऑफ डेटा कैपेसिटी वाला सेंटर होगा, जो भी 100% रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगा। अगला अपडेट टाइटन के ऊपर है। टाइटन के सेल्स के नंबर आए थे 10,360 करोड़ के सेल्स देखे मार्च 23 में, जो कि 32% अप था एज कम्पेयर टू मार्च 2022। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट्स के नंबर 730 करोड़ देखे थे मार्च 23 में, जो कि 43.14% ऊपर है मार्च 22 में। एबिटा के नंबर्स आए थे 1,203 करोड़ मार्च 23 में, जो कि 38% ऊपर है मार्च 22 के मुकाबले। पेट्रोल एलएनजी के भी सेल्स के नंबर आए थे 13,873 के नंबर्स आए मार्च 23 में, जो कि 24% अप है कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट्स के नंबर 618 करोड़ आए हैं, जो कि नीचे है 21% एज कम्पेयर टू मार्च 2022। एबिटा के नंबर्स आए थे 1,073 करोड़ आए थे मार्च 23 में, वो भी गिरावट देखी गई है
14% के आसपास, जो कि 1250 करोड़ रह चुका है मार्च 2022 में। सो टाइटन और पेट्रोनेट एलएनजी दोनों में थोड़ा कॉशियस व्यू लेके चलते हैं। लास्ट एक अपडेट स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी के ऊपर है। दो बोर्ड मीटिंग होगी 17 मई को, फंड रेजिंग के लिए होगी, और इसका जो और बोर्ड ये फाइनल इंटरम डिविडेंड के बारे में भी इसमें डिसाइड कर सकते हैं। तो ये वो इसको तो बेसिकली हम वॉच करके चलते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर एंड। थैंक्स फॉर विजिटिंग द मॉर्निंग कॉल। हैव अ ग्रेट डे।